Hello everyone, welcome to the new video. So today we'll start the chapter, his first flight. Let's begin the chapter. Chapter 4, his first flight, theme stream. This story is about a baby seagull who is too scared to fly, even though his siblings have already flown away. His parents try to encourage him by scolding and threatening him with hunger, and his mother tempts him with food. He makes a desperate dive towards it, doing so discovers that he can fly. Overcoming his fear, he learns to soar and joins his family in the air, celebrating his first success. ये स्टोरी एक बेबी सीगल के बारे में है जो बहुत डरता था उड़ने से। इवन तो उसके जो सिबलिंग्स, उसके जो भाई बहन थे, वो सब उड़ जाते थे, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत डांट कर प्यार से हर तरीके से बहुत कोशिश करी कि वो उड़े, आगे बढ़े। तो मतलब उसे डराया भी, धमकाया भी, लेकिन उसके मदर्स टेम्प्ट हिम विद फूड एंड देन ही मेक्स अ डेस्परेट डाइव टुवर्ड्स इट कि अगर तुम्हें खुद जब जाना होगा, अपना खाना ढूंढना होगा, तो तुम कैसे करोगे। तो दैट्स व्हाई वो अपनी फियर को फिर ओवरकम किया उसने। ही लर्न्स टू सोर और उसने अपने फैमिली को ज्वाइन किया एंड ही जस्ट सक्सेसफुल फ्लाइट उसने अचीव। Characters in Spotlight. Young Seagull is the main character, too afraid to fly despite his family effort. Fear holds him back until hunger forces him to take his first flight. Seagull's mother is determined and persuades the young Seagull to fly. She tricks him by holding food just out of his reach, leading him to fly. Seagull's father is stern and scolds the young Seagull for not flying. Plays a supportive role, encouraging him to overcome his fear and fly. Seagull's sibling, young Seagull's two brothers and a sister have already learned to fly and mock their brother for his fear. Later join in celebrating his success after his first flight. The quest begins. Young Seagull alone था on the ledge. His two brothers or sisters already उड़ चुके थे वो लोग the day before. He had been afraid. उसे डर लगता था उड़ने से उनके साथ. Somehow when he had taken a little run, जैसे ही वो थोड़ा सा उड़ने की कोशिश करता था, to the brink of the ledge and attempted to flap his wing, वो डर जाता था. Great expanse of the sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. तो उसे सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे ऐसा लगता था वो बेंट हो जा कर देता अपना हेड को और फिर भाग जाता था बैक टू द लिटिल होल वापस अंडर द लेज जहां पर वो रात को सो। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स और लिटिल सिस्टर्स के विंग्स बहुत ही शॉर्टर थे उससे ज्यादा हिज ओन, दे आल्सो रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप देयर विंग्स और वो उड़ जाते थे। लेकिन वो फेल हो गया टू मस्टर अप द करेज टू टेक दैट फ्लाइट, इतना करेज नहीं था कि वो उड़ सके। कि फादर मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रिली, होल्डिंग हिम, डांटा भी उन्होंने, डराया भी, धमकाया भी कि अगर तुम भूख से मर रहे होगे तब क्या करोगे, तभी उड़ना सीखोगे, ठीक है, जब तक नहीं उड़ोगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। दैट वाज 24 आवर्स अगो, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। 24 आवर्स हो गए थे, कोई उसके पास नहीं आया। अब डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच, उसने अपने पेरेंट्स को देखा कि फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स और सिस्टर्स के साथ वो फ्लाई कर रहे हैं, पर उन्हें और परफेक्ट बना रहे हैं इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उन्हें सिखा रहे हैं कैसे स्किम करना है वेव्स को एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, कैसे पकड़नी है। तो ऑल मॉर्निंग होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट एंड ऑन द बिग प्लेटो मिडवे डाउन द ऑपोजिट, टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉवर्ड आइज, कि उसकी कायरता के लिए कि वो तो बहुत ही कॉवर्ड है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको टॉन्ट भी किया और उसको दिखा दिखा के दे वर जस्ट जॉइन। अब sun was now rising higher in the sky, up blazing warmly on the ledge. He had not, उसने सुबह से पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। तब उसे एक ड्राइड पीस ऑफ मैकर्ड स्टेल मिला एट द फार एंड ऑफ द लेज। अब वहां पर नॉट अ सिंगल स्क्रैप ऑफ फूड नहीं बचा था। उसने हर जगह देख लिया अपने आसपास उसने डिग करके देखा, रफ स्ट्रॉ नेस्ट जहाँ पर ही और उसके ब्रदर्स खेलते सिस्टर्स थे, जहाँ पे हैच किया। बट लास्ट 2 आवर्स तक वो इधर उधर घूमता रहा, वापस आता रहा, एज एक लेज के एक साइड पे जाता, दूसरे पे आता, फिर his long legs tapping daintily trying to find कि कुछ means of reaching villagers के parents without having to, but on each side of him ledge ended in sheer fall, कहीं कुछ नहीं मिला, सिर्फ with the sea beneath. Between him और उसके पेरेंट्स there was a deep wide chasm था, there was no ledge जिस पर वो चल सकता था, and above him वो कुछ नहीं देख सकता क्योंकि वो उड़ने से डरता था। तो वो धीरे-धीरे उसने स्टेप्ड आउट किया टू द एज ऑफ द लेज, बट उसकी फैमिली ने कोई नोटिस नहीं करा उसने देखा अपने 2 ब्रदर्स को, अपनी सिस्टर को, वो प्लेटो lie कर रहे हैं, they are dancing with their heads sunk into their necks. The father was preening the feathers on his white back.
ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग, सिर्फ उसकी मदर उनको देख रही थी, वो खड़ी हुई थी एक हाई हम्प पे ऑन द प्लेटो. नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट lay at her feet, then scrapped each side of her beak on the rock. Up sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way. अपनी बीक से जैसे फूड को वो खाना, उसे तोड़ना. And again to wet it, he uttered a low cackle. His mother cackled too and looked over at Mary. गा 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 वो रोने लगा, begging her to bring him कुछ खाना उसको दे दो, उसको भूख लग रही थी. Go hello, she screamed back scornful. He kept calling mournfully, वो बुलाता रहा एक मिनट के बाद और सो उसने एक joyful की मदर ने पिक करा एक पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम. उसे लेके उसकी तरफ आई. ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक अपने फीट से करा ताकि वो मदर के पास जा सके. फ्लू अक्रॉस बट व्हेन शी वाज जस्ट ऑपोजिट टू हिम अलोंगसाइड द लेज हेड शी halted, her legs hanging limp, her wings motionless और piece of fish in her beak almost उसके पास था. He waited a moment in surprise, wondering why she did not कि वो पास में क्यों नहीं आ रही है. फिर then वो भूख से तड़पक गया वो. He dived at the fish with a loud scream. वो outward fell, गिर गया and downwards into space. His mother had soared upwards. As he passed beneath her, he heard the swish of her wings. नीचे से गई. तभी एक monstrous terror seized him and his heart stood still. वो कुछ नहीं सुन पा रहा था लेकिन only lasted a moment, कि थोड़ी देर के लिए हुआ. फिर अगले ही पल वो महसूस हुआ his wings spread outwards, कि उसके wings बाहर outwards spread हो गए. अब wind जो थी rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He, he could feel the tips of his wings की cutting through the air, कि उसे feel हो रहा था. वो गिर नहीं रहा है, वो उड़ रहा है. He was soaring gradually downwards and upwards, ऊपर से नीचे. नो लॉन्गर अब वो डर नहीं रहा था, उसे थोड़ा डिजी डिजी लग रहा था. फिर उसने विंग्स को फ्लैप किया एक बार, फिर वो अपवर्ड गया. फिर ही अटर्ड अ जॉयस स्क्रीम एंड फ्लैट देम अगेन दोबारा से. फिर वो ऊपर उड़ता चला गया. He raised his breast and banged against the wind. His mother swooped past to him. उसकी मदर भी उसके पास आई. Her wings making a loud noise. बहुत आवाज कर रहे थे. उन्होंने आंसर्ड करा उसको एक अनदर स्क्रीम के साथ. मतलब खुशी से वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे उनकी अपनी आवाज में. उसके फादर भी फ्लू करे ओवर स्क्रीम. देन उन्होंने अपने दोनों ब्रदर्स को देखा, सिस्टर्स जो उसके आसपास घूम रही थी, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग. देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट कि उसको ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, बिगन टू डाइव एंड सोर शीकिंग. सारा डर भूल गया. वो अब सी के पास था, बिल्कुल ऊपर उसके सी के ऊपर स्ट्रेट वो उड़ रहा था, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन. ही सॉ उसने एक बहुत बड़ा ग्रीन सी बिनेथ अपने नीचे देखा विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट. उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर्स जो सिस्टर थे उन्होंने वो ग्रीन फ्लोर इन फ्रंट ऑफ हिम प्लान किया. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his उसने अपने legs को drop किया ताकि वो green sea पर खड़ा हो सके. उसके legs जो थे they sank into it. He screamed with frightened and attempted, फिर से वो उड़ने की उसने कोशिश करी, अपने wings को flap किया. वो थक गया था, weak था क्योंकि उसे भूख लग रही थी and वो और उड़ नहीं सकता था. Exhaust हो गया strange exercise से, feet sank हो गए green sea में. And then उसके belly ने touch किया and वो sank no further. वो उस पर float करने लगा. And around him उसकी family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. Fun fact: birds like albatrosses take time to learn how to fly. Albatross chicks practice करते हैं by flapping their wings on windy cliffs before making their first flight, just like the young. Let's do the vocabulary voyage. Ledge is a narrow, flat piece of rock that sticks out from a cliff. The brink is the very last option of an edge. It spans a wide and open area. Muster up, find, or gather, usually with some difficulty. To take that plunge, to go ahead and act without worrying any longer. For the life of him, however hard he tried, him move quickly and lightly over a surface touching, taunting, making someone angry and ashamed by talking of their feelings. Cowardice, a lack of courage behavior that shows that you are afraid. Mackerel, a sea fish used for food, trotting, walking with quick steps, daintily, delicately, and carefully. Sheer, very steep, chasm, a deep, narrow opening, cleaning, cleaning himself or making his feathers smooth with its teeth. Wet, sharpened, scornfully, without respect in a disdainful manner. Mournfully, in a very sad way, limp, idle position, neither firm nor maddened by hunger, no longer able to think because
Sword rose quickly and smoothly up into the air, monstrous, terrible, and overpowering, headlong, going straight in some direction, banked, tilted, flew with one wing higher than the other when turning, swooped, flew quickly. Ridges, narrow raised lines on a flat surface, waves of sea from above, fattening, making signs to someone to come you, dogfish, a small shark. Gauge and evaluate. Latest test. Let's do true and false. Parents did not care whether the young seagull learned to fly, not false. The young seagull siblings encouraged him to fly by mocking him. True. Hunger drove the seagull to dive at fish his mother brought. True. The seagull realized that he could float on the sea without sinking after his flight. Let's do fill in the blanks. The young seagull was afraid to fly because he thought his wings could not support him. The young seagull watched his parents teach his brothers and sister how to dive for fish. His dash purposely stopped just short of each to encourage the young seagull to make his first flight. Mother. The family celebrated the seagull's first successful flight by offering him a trap of dogfish. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again, revise it. Bye. Take care.